my channel. This is Samarthi. So I'm back with trying another viral hacks. So these hacks are from Pinterest and these are going to be oversized t-shirts or oversized clothes hacks. So actually I am very fond of wearing oversized clothes, right? Not very much oversized, but yes, enough that suits me pretty well. So I was like scrolling Pinterest and just saw the very much cool hacks of oversized clothes in which they just convert a normal oversized outfit into a very cool, fashionable outfit. So I thought, why not, yeah? And actually, Pinterest is an app which I guess every girl uses, right? And it is an app which I can trust upon. Like, it's not like, okay, I don't know whether their hacks will work or not. Like, I have tried so many hacks in my channel way before and they were like, okay, 50-50, कुछ काम करते हैं कुछ काम नहीं करते, but यहाँ पे these are the fashion hacks and I guess they will work because they're from Pinterest. And oversized t-shirts I wear a lot. So yes, I thought that why not, I will try this and show you all. So yes, just let's get started, not to waste any further time, and we'll start the video. Alright, so wearing a super loose t-shirt now, and you can see how loose it is to me, but yes, I like wearing it a lot. So yes, let's see whether we are able to convert this loose t-shirt into a fashionable outfit or not, and if yes, then it will be super good. So yes, let's see what the first hack is. Alright, so she is wearing a super loose t-shirt and okay, that's it. It was really cool. So I guess I can do this with this t-shirt, right? Alright, so I am having here rubber band. Let's see क्या क्या था उसने. Just ऐसे पकड़ा था अंदर से and खींच के उसने ऐसे कुछ किया था, like अपनी fingers से. I don't know. I'm doing it, so I don't know, but okay. It's my first time. That's it, right? And now उसने रबर बैंड लगा दी थी. अब alright, so yes, that's it. Oh, it's looking super cool, yaar. First hack worked. And नीचे से भी you can see how is it looking. Right, so it's cool, I guess. Oh, a whole new look, and you can see this pattern. जो ये frills आ रही है kind of, जो इनकी अच्छे से आ रही थी, but of course it was my first time, मेरी इतनी अच्छे से नहीं आई. But it's okay, it's a go-to hack. Like, if you don't have any other creative idea for your loose t-shirt, you can really try this out. And हाँ, पीछे से थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा. But I guess this is super cool, yeah. It worked. First time worked. Now let's see what another hack is. Alright, so next hack is for this kind of sleeves. If you have super long sleeves like this, then देखते हैं उसके लिए इनके पास क्या hack है. Okay. Alright. So rubber band की help से ही इन्होंने ऐसे sleeves को अच्छे से ऊपर कर दिया है. Let's see, हमारे पास ये जो रबर बैंड है उससे हम ये थोड़ा बहुत तो हो गया. अभी ये स्लीव्स को भी देखते हैं हम whether we can convert it or not. Let's try. So इसमें ऐसे किया है and then just ऐसे ऊपर खींच लिया, right? But it will look like this crease. Alright, so I'm done with this much sleeves, but let's see how is it looking. Overall look like this. Okay, if our hand is folded like this, then इतना पता नहीं चल रहा है. But अगर ऐसे सीधा है तो of course ये जो चीज है वो दिख रही है. But okay, let's see the overall look. Alright, so this is an overall look. You can see कि ये कैसा look दे रहा है. You can just now you imagine that ये कैसी थी t-shirt, full overall t-shirt कैसी थी, and now what I have made out of these oversized hacks from Pinterest. Like यहाँ से भी एक अच्छा look आ गया है. Sleeves भी comfortable हो गई है. Like you won't feel uncomfortable कि यहाँ पे ऐसे बीच में आ रही है ना. So yes, and overall look जो है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बाहर नहीं पहन के जा सकते. Yes, we can wear it even outside.
and we just now need to pair it with some accessories like earrings and layered chains, and this is a perfect look to go even out. Alright, so wearing another loose t-shirt which looks like this, and now let's see इस t-shirt को हम किस तरीके से fashionable outfit में convert करते हैं. Now you can see in this hack that इन्होंने तो इसे अच्छे से cute ribbon t-shirt में convert कर दिया. Now it's our turn to try this hack and let's see how it works. So yeah, पहले इन्होंने इसे tie किया है rubber band से. Alright, so how it is done. So I'm having this ribbon which I guess will perfectly suit this outfit. I just have I'm just supposed to tie this over this. Okay, even I can make a bow, like my ribbon is quite long. Then there's उनके पास like scarf था शायद, so I can make even a bow out of it. And yes, I'm done now. Okay, you can see. I guess now this t-shirt is fully satisfying the purpose of what is written over here. That the print is beautiful now. Actually, the print is looking beautiful, right? Like पहले ये t-shirt कैसी लग रही थी, you know, and just see अब इसको थोड़ा different look मिल गया है. And this all hacks are not कि हम बाहर इसे try करके जा नहीं सकते, right? They are actually looking very pretty, like oversized and normal कपड़ों से, so these are looking really stylish. So third hack also work like anything. Alright, so next hack में इन्होंने क्या किया है, एक ऐसी oversized टी-शर्ट को, नॉर्मल सी टी-शर्ट को एक क्यूट क्रॉप टॉप में कन्वर्ट कर दिया है. यू कैन सी इट ओवर हियर इन द वीडियो, एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस रबर बैंड, राइट? सो लेट्स ट्राई इट कि हम पे ये फिर कैसा होता है. सो इन्होंने जस्ट ऐसे करके ऐसे किया एंड देन फोल्ड किया, राइट? एंड यहाँ से एक रबर बैंड लगा दी, राइट? Okay, so this is how it's looking right now, and अब ऐसे करना है, right? So okay, you can see how's it looking like. पहले जिस तरीके की नॉर्मल टी शर्ट थी, अब it turned out to be a crop top now. You can see it how's it looking. ओके, सो पहले से तो ऑफ कोर्स अच्छी ही लग रही है, राइट? पीछे से ऐसे आपको इन करना पड़ेगा, लाइक इस तरीके से, व्हाटएवर यू वांट. बट या यू कैन सी इन द इवन कमेंट सेक्शन दैट कैसा लगा आपको, कौन से हैक अच्छे लगे. एंड यस, पहले जैसी थी उस हिसाब से अभी तो ये और अच्छी लगी रही है, राइट? ऑफ कोर्स लाइक नॉर्मल प्लेन टी शर्ट से तो अच्छी ही लग रही है. And yes, that's how it's looking right now. This was the fourth hack, I guess, which worked. Now it converted into a cute look, right? So let's see what another hack is. Alright, so another hack is also converting a t-shirt into a crop top, but in another way, and I guess it will be an easy way for all of us. And for this one also we only need rubber bands. So here I am having 2 rubber bands, and let's start like they are showing in their hack. So let's start doing it. So it's looking like this now. अभी ये इस तरीके की लूज है, बट इसे हम यहाँ से थोड़ा बांध देंगे, थोड़ा इस तरीके से तरफ से बांध देंगे, and I guess then it will be a cute crop top. Okay, so done from the one side. Now this side. It's looking funny right now, but wait for the end. Okay, done. Now just fold it. We have to fold it. Okay, you can see done. Okay, बहुत like
नॉर्मल प्लेन क्रॉप टॉप जो होता है ना, मतलब अब तक हमने जो किए वो काइंड ऑफ पैटर्न वाले डिजाइन वाले आउटफिट टर्न हो रही थी, बट इस बार जो है ये नॉर्मल क्रॉप टॉप जो होता है ना वो बना है. एंड आई गेस इट्स सुपर इजी, लाइक इफ यू डोंट हैव टाइम, यू आर रशिंग फॉर समवेयर, it's quite easy, right? We can carry this hack out, and yes, it actually turned this t-shirt into a crop top, which is not getting recognized कि हमने कुछ है क्या कुछ जुगाड़ करके किया है. It's looking super cute and go to hack हो सकता है ये. Like I said कि अगर हमें कहीं जाने के लिए जल्दी हो, like if you are super late as I am most of the times, so we can carry this hack out. But yes, a normal plain t-shirt, if आपको normal crop t-shirt आपको चाहिए, so घर पे से भी बन सकती है. So yes, let's see what another hack is. Now the next hack, what they are doing, उन्होंने जस्ट शर्ट की एक दोनों साइड्स को बेल्ट स्ट्राइप्स में से पास करके दे मेड अ बो. यू कैन सी इट ओवर हियर. उन्होंने जस्ट ऐसे करके बो बना देना. दिस इज रियली क्रेजी. लेट्स सी. ओके, हम ट्राई करते हैं कैसा लगता है. सो आई एम पासिंग इट फ्रॉम दिस stripe, belt stripe, and now I'm supposed to pass another one, right? So let's see. I don't know it will go or not. Okay, and yes, that's it. I'm done. Alright, so you can see how's it looking. एक cute सा bow बन गया है, जबकि हमने कुछ किया भी नहीं, जस्ट इसे बेल्ट की स्ट्राइप्स में से जो है वो बस पास कर दिया है. एंड इट्स डन, वी आर रेडी. तो यस, दिस वाज अनदर हैक. आप बताना आपको ये वाला हैक पर्सनली कैसा लगा, बिकॉज सारे हैक्स को अगर प्रायोरिटाइज करने जाए, सो आई विल कीप दिस हैक इन द लास्ट according to me. आप बताना अपने opinions in the comment section. So yes, this was it for the video. We tried a lot of hacks, out of which सारे hacks काम किए. Like it has never happened कि you know जब जितने भी अभी तक मैंने अपने videos किए हैं hacks वाले, कि सारे hacks you know work किए 100%. But this time I was pretty sure कि नहीं, इस बार तो hacks काम करेंगे, because first thing it was fashionable hacks. Second, it was clothing hacks, right? So there was a lot of reasons that they have to work out. After all, they were Pinterest hacks also. Don't forget it. So yes, this was it for the video, and I am pretty satisfied क्योंकि अगर हम नॉर्मल टी शर्ट्स को इतनी फैशनेबल टी शर्ट्स में टर्न कर सकते हैं, सो व्हाट एल्स डू वी वांट, राइट? सो यस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. कमेंट डाउन आपको कौन सा हैक सबसे ज्यादा अच्छा लगा. लाइक द बटन, टर्न दैट ब्लैक थंब ब्लू, दैट मीन्स लाइक कर देना. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.